Good morning, student. We are already started with the lectures of computer science paper 2 with the first chapter, that is electronic component. We are seen in two sessions till now, right? Then let us revise very fast and then move further. So we have seen what is electronic component. Electronic component are classified into two: passive component and active component. Passive components are those components which cannot amplify, right? Okay, like example resistor, capacitor and inductor. Active components are those which are capable of the active function like amplification, rectification, switching. They are called as active component. Example diode, LED, transistor, vacuum tube, right? Then we concentrated on passive components. Passive components three: resistor, capacitor and inductor. We started with the capacitor, its symbol, its unit, the function, the types, and we have studied each type in detail. Then we have solved some problem on color code, right? So then we moved on to capacitor. डिफरेंट टाइप कलर कोड से हमने प्रॉब्लम भी देखे हैं. गिवन द कलर कोड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड गिवन द वैल्यू हाउ टू फाइंड द कलर बैंड, वो हमने सब किया था, राइट. आफ्टर दैट इन द सेकेंड सेशन वी स्टार्टेड विद द कैपेसिटर. Capacitor, we are seen again, it is a passive component. It is of two type: fixed type and variable type. Then we have seen the how it is manufactured, what do you mean by charging and discharging, and time constant, RC, time constant. It is a time required for the capacitor to get charged up to 63.28% of the applied voltage, or the time taken to discharge. उसका formula देखा था. Then we have seen the problem based on that, right? Then we have seen problems देखे थे. Okay, after problem we have seen the capacitors connected in series and capacitor connected in parallel, and the problem based on that. In two sessions we have completed this much syllabus, right? So today we will see the capacitor, type of capacitors. Okay, type of capacitors. The capacitors are classified टू द डायलैक्ट्रिक मटेरियल यूज. जो दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल यूज होता है, और बेस्ड ऑफ दैट द क्लासिफिकेशन इज डन. देन पोलर कैपेसिटर आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक. पोलर मीन्स जिसको पोलैरिटी होती है. नॉन पोलर कैपेसिटर्स आर आल्सो नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर. सो बेस्ड ऑन दिस द क्लासिफिकेशन इज डन. ओके, सो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन. Fixed type. Fixed type are classified to dielectric material and polar and non-polar. कौन कौन से हैं? पेपर, कैपेसिटर, नॉन पोलर है, कैपेसिटर, माइका, इफ द डाइलेक्ट्रिक माइका है, राइट. सो द नेम इज ऑल्सो गिवन डिपेंडिंग अपॉन द डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स. अगर पेपर यूज किया है बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स, देन इट इज कॉल्ड एज पेपर कैपेसिटर. अगर माइका यूज किया है, दे आर इंसुलेटिंग, राइट. Then mica capacitor, that is non-polar capacitor. Polyester capacitor, non-polar capacitor. Ceramic capacitor, non-polar. The polar aluminum electrolytic capacitor and tantalum electrolytic polar electrolytic capacitor. So these two are polar capacitors, and the remainings are the non-polar capacitor or non-electrolytic capacitor. पेपर कैपेसिटर. नाउ पेपर सी यहाँ पे द पेपर कैपेसिटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग द rolling the paper in between the two conducting plates. Okay, so यहाँ पे पेपर है, tin foil है, and waxed paper is there, and it is wrapped on a conducting wire, right? So capacitor for aluminum foil, tin foil and electrolytic. So this rolling the two thin metal foil separated by a paper roll. यहाँ पे जो पेपर यूज करते हैं, नॉट द नॉर्मल पेपर बट इट इज़ वैक्स. विथ वैक्स और ऑयल से वो पेपर को क्या करते हैं, क्राफ्टेड करते हैं, एंड देन इट इज़ इंसर्टेड बिटवीन द टू foil, metal foil. The impregnation is process in which the paper is soaked with the dielectric wax or oil, and then it is been inserted, right.
देन कम माइका. सो इंस्टेड ऑफ नाउ यहाँ पे क्या है, मेटल प्लेट के बीच में क्या लगाया है, ये माइका शीट है, राइट. दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो यू कैन सी दिस, राइट. सो इंस्टेड ऑफ पेपर नाउ माइका इज यूज्ड. सो दिस, okay, the construction is similar to the paper capacitor, only the dielectric material used is mica sheet instead of paper. Mica capacitor are square or rectangular in shape and tinned with the leads, right. Lead होते हैं for connecting purposes. Then comes ceramic capacitor. इसमें क्या होता है, अगेन यहाँ पे दिखाया दो कंडक्टिंग प्लेट है और एक सिरामिक प्लेट है. इन बिटवीन दिस टू सिरामिक इज अ डाइलेक्ट्रिक. देखो यहाँ पे दिखा है ये सिरामिक है और यहाँ पे दो कंडक्टिंग है एंड दिस आर लीड्स प्रोवाइडेड फॉर कनेक्शंस, राइट. अगेन दिस आर व्हाट स्टूडेंट्स, दिस आर नॉन पोलर कैपेसिटर एंड उस पर वैल्यू लिखा है यहाँ पे 104 है. सो 104 मतलब 104 picofarad. I told you the capacitors, the unit is farad, but they are expressed in lower unit, that is in microfarad, nanofarad and picofarad. सो 1004 रहेगा तो क्या होता है, लाइक आपने रेजिस्टेंस का कलर कोड देखा है, राइट. सो 10 इंटू 10⁻⁴, ये 4 विल बी अगेन पावर टू द 10. क्लियर. अभी आपको इस पर नहीं करना है प्रॉब्लम. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट ओनली. सो अगेन इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ ceramic material as a dielectric. Okay, and then the two leads are connected together. Then next one is electrolytic या polar capacitor. यहाँ पे क्या होता है, in between there is a, this is a polar capacitor, right. Electrolytic capacitor consists of aluminum foil electrode as in aluminum oxide film covering one side and the contact in another, and an electron conducting fluid is known as electrolytic. यहाँ पे fluid है यहाँ पे, right. और एक साइड क्या होता है पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव. एंड सी द पोलर कैपेसिटर आर नॉट इन वन कलर. तो यहाँ से आप एक कैपेसिटर देख के ही आपको पता चल जाता है स्टूडेंट ये पोलर है क्या नॉन पोलर है. यहाँ पे दो कलर है, देखो ये डार्क कलर रेड और ये लाइट. सो फ्रॉम द आपने सिरामिक देखा एक ब्राउन कलर का था और उस पर द वैल्यू इज बीन प्रिंटेड, राइट, 104. सो देयर इज अ यूनिफॉर्म कलर प्रिंटिंग इज डन. यहाँ पे दो कलर्स में है, एक डार्क. सो जहाँ पे डार्क है दैट इज अ पॉजिटिव लीड. ओके, दिस इज अ पॉजिटिव लीड एंड दिस इज नेगेटिव. यहाँ पे देखो एरो भी दिया है. सो by seeing the capacitor also you come to know that it is polar or non polar. और लीड भी देखो पॉजिटिव बड़ी होती है और नेगेटिव छोटी होती है. बट कभी किसी ने काट दिया सेम इक्वल लेंथ किया तो यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच इज़ पॉजिटिव विच इज़ नेगेटिव. तो यहाँ से पता चल जाता है. ओके, दे आर टू डिफरेंट कलर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड द डाइलेक्ट्रिक यूज इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, यहाँ पे सिंबल देखिए दे. सो द सिंबल आल्सो ओके. नॉन पोलर में क्या होता है दो पैरेलल लाइन इट इज़ रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय डिफरेंट सिंबल्स. सो यू शुड नो द सिंबल्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कैपेसिटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट. नेक्स्ट इज इंडक्टर. Okay, next we'll do inductor. The third type of a passive component is inductor. इंडक्टर इज़ अ पैसिव कंपोनेंट. ये कहाँ ज़्यादा करके यूज़ होता है, दे आर वाइडली यूज इन एसी सर्किट. व्हाट इज़ अ इंडक्टर, नथिंग बट कॉपर कॉइल. ये कॉपर कॉइल को ही इंडक्टर बोलते हैं. एंड जो ये कॉपर कॉइल जिस पे वाउंड होता है एंड डिपेंड ऑन दैट इट इज़ बीन क्लासीफाइड. सो ये एसी सर्किट्स में ज़्यादा यूज होता है दैन इन डीसी सर्किट्स. ओके, what is a inductor? Inductor is a coil of copper wound on a core material. यहाँ पे जो core है यहाँ पे दिख रहा है ना रिंग टाइप. This is a core material. It can be iron, it can be ferrite, whatever core it is wound on. It depends on that the type of inductors are done. Inductance is the capability of the conductor to produce an induced voltage, right. यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा देर इज़ अ इंड्यूस्ड वोल्टेज. आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज इज inserted or generated when the current through it varies. The inductor opposes the change in current. So what is the function of inductor? To keep the current constant or to oppose the change in current. और ये कहाँ पे ज़्यादा करके यूज़ होता है, इन योर AC सर्किट रादर दैन DC सर्किट, राइट. सो ये इंडक्टर है. सो लेट अस सी. हाँ,
सी हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये कॉइल है, ये आयन कोर है यहाँ पे, और उस पर कॉपर वायर, राइट। जैसे ही आप करंट पास करते इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, क्लियर, एंड इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस वोल्टेज इज प्रोड्यूस। यूनिट क्या है इसका, हेनरी, द यूनिट ऑफ इंडक्टर इज हेनरी। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज रिजल्ट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, राइट, and across a conducting because of AC current flowing through it. So here Henry is again a bigger unit. So inductor unit is Henry, but it is all many times expressed in millihenry or microhenry. जैसे कैपेसिटर में Farad is a proper unit, but it is expressed in the lower unit. They are available in lower unit, that is microfarad, nanofarad, या picofarad, right? When the DC current flows through this conductor, induction is not possible. Induction होगा क्या, क्यों नहीं होगा, because DC current is steady, नहीं होगा, तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा क्या, नहीं होगा, एंड इट फ्लोज ओनली इन डायरेक्शन। टू इंड्यूस करंट इन अ मैग्नेटिक इन अ कॉपर वायर वी रिक्वायर अ चेंज इन करंट, राइट, चेंज इन करंट जहाँ पे होता है वहीं पे। सो इट इज़ यूज्ड इन AC एंड नॉट इन DC। DC में भी यूज़ करते हैं बट नॉट रेयरली। Okay, now let us see the type of inductor. Inductor can be classified into two again, fixed type and variable type, but they are classified according to the material used, right? Core जो जिस पे जो copper wire wound होती है, the classification is done on based of that. Air core inductor, iron core inductor and ferrite core. Ferrite is not a natural but it is a artificial metal, right? Ferrite core inductor. So now let us see the symbol. ये symbol है हर एक का, एयर कोर का देखो सिर्फ कॉपर वायर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉपर वायर बाउंडेड, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ दैट, ओके, कॉपर वायर। और इसका भी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे वी नो कैपेसिटर का कैसे करते, नाउ हियर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, एंड द रेडियस एंड द diameter. So based on that the inductor value is find out, right? So inductor is equal to L into N square, that is number of turns, into the diameter 18 divided by 18D, D is the diameter again, plus 40L, right? So ये है उसका calculation, but that is not, that is the additional information given to you. You should know the different type of inductor, the unit of inductor and the symbol of inductor. So air core में क्या होता है, there is a hollow, there is no core used, right, in that. So air act as a core and hence the air core inductor. The next one is iron core inductor. When the copper wire is wounded on the iron bar, that is called as iron core inductor. So let us see the symbol. ये इसका सिंबल है, देखो यहाँ पे कॉइल है और ये दो पैरेलल लाइन आएंगे, यू कैन डू इट हॉरिजॉन्टल also like this, a copper wire coiled like this, and here two lines. So this is the symbol of iron core inductor, right? So यहाँ पे the iron core is placed in the form of coil, so iron core inductor. Iron is a what, magnetic material. So when the AC current flows through this, the flux are produced, right? आयन कोर इंडक्टर नॉर्मली चोक, जो ट्यूबलाइट में पता है पहले की ट्यूबलाइट आती थी, अभी तो सब जगह पे LED ट्यूबलाइट है स्टूडेंट, पहले जो आती थी ना पट्टी वाली ट्यूबलाइट, वहाँ पे जो चोक होता था उसमें इंडक्टर यूज़ करते थे। अभी तो सब लोग LED, अभी तो सेमीकंडक्टर इतना एडवांस कर दिया है, एडवांसमेंट हो गया है कि नाउ सब LED LCD में ही आ रहे हैं, राइट? So we are replacing all this with the semiconductor devices. So last one is the ferrite core. Ferrite is a material and उसका symbol देखिए कैसे है, again a copper wire and which is wound on what, it is wound on a, और दो लाइन से सिंबल है, तो यू शुड नो द सिंबल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंडक्टर, ओके। Ferrite is an artificial made non-metallic material on which the copper wire is wound. तो यहाँ पे दिख रहा है, so this is a ferrite core on which the copper wire is wound, right? Again,
क्यों यूज़ करते हैं फेराइट कोर? बिकॉज मिनिमम लॉस ऑफ लाइन ऑफ फ्लक्स. व्हाट इज द रीज़न? यू शुड नो द रीज़न कि इस पे ही क्यों बाउंड किया जाता है. व्हाई नॉट? देर आर सो मेनी मटेरियल. So to minimize the loss of line of flux, the ferrite core inductor are used for audio and radio frequency. So जहाँ पे जो भी सर्किट में ऑडियो और रेडियो फ्रीक्वेंसीज है वो सर्किट में भी ओपन करेंगे, या आपका टीवी का जो मदरबोर्ड है या पीसी का मदरबोर्ड है, यू विल सी दिस इंडक्टर. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई ना इंडक्टर कौन सा है, बिकॉज यू नो हाउ इट लुक्स लाइक, राइट. कैपेसिटर कैसे है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है. तो इफ़ आई गिव द पीसीबी तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा और यू विल बी इन द पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, राइट. सो this now we'll do transformer, that is nothing but the inductor type. The transformer consists of two inductors. So let us see two inductor. यहाँ पे दिखा है the one inductor which is connected to the AC is called as a primary. So यहाँ पे two inductor है, ये iron core inductor है और ये भी क्या है, iron core inductor है. जो हम AC सोर्स को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे क्या आएगा, AC ट्रांसफार्मर, राइट. तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग. ओके. एंड जहाँ से आउटपुट निकालते दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी वाइंडिंग. सो ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ टू वाइंडिंग्स, टू इंडक्टर, अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट, एंड द कॉपर कॉइल. तो यहाँ पे द एक्चुअल पिक्चर दिखाया गया है. एवरी पावर सप्लाई में ये ट्रांसफार्मर होता ही है. उसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट? आइदर टू इंक्रीज द वोल्टेज एसी टू एसी. तो यहाँ प्राइमरी में कितना आता है, मेंस वोल्टेज कितना आता है, 230 वोल्ट एसी. एंड हाउ मच इज द फ्रीक्वेंसी, हमारे घर जो आता है दैट इज 50 हर्ट्ज. तो यहाँ पे डिपेंड ऑन दिस वाइंडिंग either the voltage will be step up or step down. तो कितना है, बेसिकली 230. तो उसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं 15 वोल्ट 20 वोल्ट एज पर रिक्वायर्ड, या उसको स्टेप अप भी कर सकते हैं वोल्टेज मोर देन दैट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, बट इंडस्ट्री में 400,000 वोल्ट भी लगता है. तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, बट इट विल बी AC, right, AC to AC. So output will be AC, but only the voltage will increase or decrease, right, depending upon this winding. ओके. ये वाइंडिंग पे डिपेंड करता है आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है. ओके. यहाँ पे देखिए है ना, हमने क्या किया, हाँ, दिस इज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है. सो दिस इज कॉल्ड, ए ब्लू में रिप्रेजेंट किया है प्राइमरी वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड टू AC सप्लाई. आपने घर में डायरेक्टली लगाया है. बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड, राइट. मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है करंट फ्लोइंग टू द कॉइल, एंड दैट देयरफॉर द वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी एंड द बल्ब क्लोज. बल्ब ग्लो हो रहा है. ओके. तो यहाँ पे देखो, you can see it animation है ये, and clearly you can see how the transformer works, right. There is no connection between the primary winding and the secondary winding because of the induced volt, because of the magnetic flux. There is a induced voltage in the secondary and therefore the bulb glows. Understood, student? So this was transformer. So let us see. As I told you, there are two type of transformer, step down transformer and step up transformer. तो यहाँ पे many turns, high voltage, low current. सेकेंडरी में क्या है, few turns, स्टेप डाउन की बात करें हम, स्टेप डाउन में टर्न्स कितने हैं, ये देखो यहाँ पे दिखाया भी है ना, टर्न्स. यहाँ पे मेनी टर्न्स. तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, लो वोल्टेज, और यहाँ पे हाई करंट, और यहाँ पे अक्रॉस लोड. जैसे हमने बल्ब लगाया था, लोड इज नथिंग बट बल्ब या एनी अदर सर्किट, राइट. सो दिस इज आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर इज an important device in which the voltage transform from one voltage level to the required voltage level. Transformer works on AC. I told you इनपुट भी AC और आउटपुट भी हमको क्या मिलेगा, AC, but only there will be a change in voltage level. Step down मतलब to decrease the voltage to the applied voltage, and step up is to increase. Now working the winding.
which is connected, करेक्टेड नहीं है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, connected to the mains is called as primary winding, right? And winding across which the output is obtained is called as secondary winding, right? When the AC voltage is applied across the primary, हम AC voltage किसको अप्लाई करते हैं? प्राइमरी. Okay, and the AC current flows through it, and therefore the change in magnetic flux, and this induce the voltage in secondary. Secondary winding is kept close to the primary winding, which will cut this changing flux, right? And ये changing flux को clear करेगा and induce a voltage law. Voltage is induced in the secondary winding. The amount of induced voltage, अभी कितना induced voltage होगा, that depend on the number of primary turns and secondary turns. Understood? तो formula क्या है? NP. What is NP? Number of turns in primary divided by number of turns in secondary is equal to voltage across primary winding and voltage across secondary winding. Okay, turn ratio. NP upon NS is equals to VP upon VS. Clear है आपको? The turn ratio. Okay. Power. Power is what? Power in primary is equals to power in secondary. What is a power? Power is product of current and voltage. IP up into VP is equals to, okay, IP into VP is equals to IS into VS. So VP upon VS is equals to IS upon R. They are inversely proportional. Understood? So the current and voltage relation inversely है, और ये कैसे है? It is directly NP upon NS is equals to VP upon VS. Student, you should remember this. So let us solve some problem based on this. Okay. Has turn ratio of 10 is to 1. तो 10 is to 1 मतलब क्या? NP is to NS. Find the secondary voltage if the primary is connected to 220 volts supply. तो कितना volt supply दिया है? 220. So let us write given. तो what is given? NP is to NS, that is 10 is to 1. प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट. फॉर्मूला क्या है? NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू VP अपॉन VS. सो 10 अपॉन 1 220 इंटू VS. तो VS क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो VS इज इक्वल्स टू 220 अपॉन 10, दैट इज 22 वोल्ट. अंडरस्टूड? सो वेरी सिंपल, जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्मूला. बट आपको सिस्टमेटिक वे से लिखना है गिवन क्या है, व्हाट टू फाइंड, देन फॉर्मूला एंड द आंसर. एंड स्टूडेंट प्रॉपर यूनिट देना है. वोल्टेज इज ऑल, वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट्स वी. ओके, तो यू शुड बी द सेकेंड वन. यहाँ पे अगेन सेम है. ट्रांसफॉर्मर हैज टर्न रेशियो 5:1 and if the secondary voltage is 40 volts and 50 hertz. So what is the frequency? 50 hertz. Find the primary voltage and the frequency of the supply. तो NP is to NS दिया है आपको यहाँ 5:1. Now we are given the secondary voltage, that is 40 volts. Again the same formula, NP upon NS is equals to VP upon VS. तो 5 upon 1 VP upon 40 cross multiply, तो VP comes out to be 5 into 40 200 volts. Now they are said again आपको primary voltage निकाला हमने 200 volts. What is the frequency? Students, here the frequency of the input as well as the output remains the same. The frequency is same of primary as of primary. So कितना आएगा? 50 hertz आएगा. ठीक है, बट ये लिखना है, इसको 1 मार्क है. ओके, अगर 3 मार्क्स है तो इसको primary voltage, even though it is remain same, but you have to mention it in the answer that yes, the frequency remains same of primary, that is 50 hertz. तो ये मेंशन करना ज़रूरी. अगर आपने मेंशन नहीं किया मतलब आपने क्या किया? क्वेश्चन का हाफ ही पार्ट आंसर किया है. एंड इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ 3 मार्क्स, सो हाउ मच मार्क्स यू विल गेट? 2 मार्क्स, क्योंकि आपने ये लिखा ही नहीं. क्वेश्चन हमको क्या पता है सेम रहता है कि नहीं रहता है ना. You have to tell, right? You have been asked the question. Understood? Okay. Okay, right.
So let us see the other type of resistor. Okay. Okay. So student, in next lecture we will see the other part or the other resistor. Thank you.